Welcome in the new lecture of genetic engineering techniques. We are discussing how to obtain gene of interest. In the previous lecture, we have discussed how to obtain gene of interest by using genome library, cDNA library, and we can also synthesize our desired gene by using DNA synthesizing machinery. In this lecture, we are going to discuss polymerase chain reaction, that is abbreviated as PCR. PCR is mainly used to amplify the gene, mainly used to amplify any type of gene, but in genetic engineering we use this PCR to amplify our gene of interest. PCR is most important and basic technique in molecular biology, in genetic engineering and biotechnology. PCR, polymerase chain reaction. The polymerase chain reaction is a technique by which small samples of DNA can be quickly amplified, that is increase the quantities that are large enough for analysis. वो टेक्निक जिसमें हम small sample of DNA को amplify करके उसकी quantity को increase कर सकते हैं and that can easily analyze for further genetic engineering techniques. Starting with just one gene size piece of DNA. DNA का सिर्फ एक ही piece के size से PCR can be used to make literally billions of copies in only a few hours. Few hours में billions of copy can be produced by using PCR. We can also define PCR as a common genetic technique used to obtain multiple copies of target DNA fragments or target DNA using Taq DNA polymerase in a temperature-dependent reaction. Or PCR polymerase chain reaction is a cyclic temperature-dependent reaction used to amplify the gene of interest. The technique in which we amplify our gene of interest, we isolate or we separate our gene of interest by amplification of the gene of interest by using this PCR. This PCR is temperature-dependent reaction because in the PCR, the temperature is fluctuated. There are different steps of the PCR. The first step required the 90 to 94 degrees centigrade, and the second step required 50 to 54, and the third step required 72 degrees centigrade. That's why it is a temperature dependent reaction. So PCR is a cyclic temperature dependent reaction that is used to amplify gene of interest. तो इस लेक्चर में हम अपने gene of interest को amplify करेंगे. PCR requirements. PCR is also called in vitro replication because it is similar with the process of the replication. The requirements of the PCR are similar with the requirements of the replication, but PCR is it takes place in the laboratory or in the test tube. That's why it needs a special requirements. The chemicals that are used in the PCR reaction are template DNA, the DNA that is going to be amplified, dNTPs, primers, distilled water, PCR reaction buffer, and enzyme, the special enzyme that is called Taq DNA polymerase. It is in the temperature resistant enzyme. It can resist high temperature. Instruments that are used in the PCR reaction are thermocycler, spinner, and agarose jet electrophoresis unit. Other utilities required: PCR tubes, stands, pipettes, tips. Basic requirements of PCR: we have discussed that DNA is a template, primer that used to initiate the reaction or start the reaction. DNA polymerase always require a primer to start to elongate or to aid the dNTPs along with this primer. DNA polymerase that is used for the elongation reaction, dNTPs that will bind with the complementary strand, and the buffer and the cofactors. Cofactors are used for the enzyme reaction and buffer that maintain the pH in the reaction. Now we will look at the detail of the each requirement. Template DNA, the DNA that we are going to amplify. The template must be DNA only. Plasmid DNA, bacterial DNA, cDNA, or genome DNA can be utilized as a template. Each strand of the target DNA will serve as a template for DNA synthesis. Target DNA का हर strand template के तौर पर act करेगा. The concentration of the template DNA must be 30 nanogram in 25 माइक्रोलीटर रिएक्शन. अगर हम 25 माइक्रोलीटर रिएक्शन मास्टर मिक्स हम बनाएं, उसमें जो कंसंट्रेशन डीएनए की होगी, जो टेम्पलेट की होगी, दैट इज 30 नैनोग्राम. If we want or if we amplify our this strip edge gene, then it can
used for the PCR reaction. It can be a template for our PCR reaction. तो हमारा ट्रिप ए जीन जो है ये एज अ टेम्पलेट के तौर पर एक्ट कर सकता है. इसको हम जब एम्पलीफाई करेंगे तो दिस ट्रिप ए जीन विल बी अवर टेम्पलेट. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बाद जो ट्रिप ए जीन है दैट इज एम्पलीफाइड अप टू several millions time. So template DNA is a DNA that is going to be amplified. Second requirement for PCR reaction are the dNTPs. dNTPs are the deoxynucleotide triphosphates that are artificially synthesized nucleotides which binds to the growing DNA strand. With the help of Taq DNA polymerase, the DATP, DGTP, DCTP, and DTTP binds at its complementary nucleotides on the growing DNA strand. जो complementary strand है उसकी elongation के लिए जो DNTPs हैं Taq polymerase की मदद से complementary strand के साथ attach होंगी, bind होंगी. 1 millimole to 2 millimole of each dNTP are sufficient for 25 microliter of PCR reaction. Total concentration of dNTPs in the PCR reaction must be 800 micromole for 50 microliter. 50 microliter अगर मास्टर मिक्स है तो उसमें dNTPs की concentration होगी 800 micromole. For 25 microliter मास्टर मिक्स, अगर हम जो टोटल कंसंट्रेशन है मास्टर मिक्स जो हम बनाएंगे उसमें अगर 25 यूज कर रहे हैं तो उसमें टोटल कंसंट्रेशन जो dNTPs की है वो 400 माइक्रोमोल होगी. 50 micromole each dNTP is used in the PCR reaction for 25 microliter. Third requirement for PCR reaction are primers. Primers are the short pieces of nucleotides that are added to start the reaction. The primers are complementary to the ends of the target DNA and will hybridize to the fragments to be amplified. प्राइमर्स हमेशा कंप्लीमेंट्री होते हैं, जो टारगेट डीएनए के एंड्स हैं उनके कंप्लीमेंट्री होते हैं, उनके साथ हाइब्रिडाइज होते हैं ताकि एम्प्लीफिकेशन हो सके. द आइडियल प्राइमर शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. प्राइमर मस्ट कंटेन 50 to 55% ऑफ जीसी कंटेंट. जीसी कंटेंट 50 to 55% होना चाहिए. एटलीस्ट 18 to 22 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. जो लेंथ प्राइमर की है वो 18 to 22 न्यूक्लियोटाइड होनी चाहिए. Primer does not contain secondary structure. The annealing temperature between 50 to 65 degrees centigrade. Anneal temperature वो टेम्परेचर होता है जिसमें प्राइमर टेम्परेचर के साथ जाकर बाइंड होता है. दैट इज कॉल्ड annealing temperature. इसका जो annealing temperature है 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड का दरमियान होना चाहिए. 10 picomole is enough for PCR. PCR के लिए 10 picomole primers are more than enough. Polymerases. Polymerases are the very important requirement of the PCR reaction. The polymerase synthesizes new complementary strand. जो dNTPs को ऐड करेगा, जो DNA को elongate करेगा, वो polymerases करेंगे. तो जहाँ पे जो हम polymerase इस्तेमाल करेंगे वो temperature resistant, heat resistant जो polymerases इस्तेमाल करेंगे. There are different types of polymerases. जो polymerases हम PCR में इस्तेमाल करते हैं उसमें mainly Taq polymerase होता है. Taq polymerase को नाम देते हैं because it is isolated from a bacteria that is Thermus aquaticus. It is a mainly found in the hot springs. That's why it is heat resistant bacteria, and this enzyme is a heat resistant. It can resist up to 95 to 96 degrees centigrade. Enzyme from the Thermus flavus, that is called TF1 polymerase, can also be used, and the enzyme from Thermus thermophilus, TTH polymerase. In addition to the Thermus drive polymerases, a thermostable DNA polymerase from the Pyrococcus furiosus is also available. It can also be used as a polymerase in the PCR reaction. So जो polymerase हम इस्तेमाल करेंगे वो heat resistance polymerase होगा. Mainly हम इस्तेमाल करते हैं Taq polymerase that can resist high temperature. PCR buffer. The PCR reaction buffer is the combination of different chemicals which enhance the amplification efficiency of the reaction. Generally, the PCR reaction contains magnesium chloride, DMSO, potassium chloride, amino sulfate, albumin, betaines, and other ingredients that used to maintain the pH and used to increase the amplification efficiency of the reaction. PCR master mix that we have discussed, these are the different requirements जो हमने dNTPs, magnesium chloride और उसमें Taq DNA polymerase, forward primer, reverse primer, template DNA और molecular water, distill water जब जो हम डिस्कस कर चुके हैं. इनकी जो फाइनल वॉल्यूम हम इस्तेमाल करेंगे
these are the concentration of the stock solutions, these are the concentration of the working solution, and these are the final volume that we will use in our master mix. अगर हम 25 माइक्रोलीटर का मास्टर मिक्स बना रहे हैं, उसमें जो कंसंट्रेशन है रिएक्शन बफर की 2.5 माइक्रोलीटर होगी, जो MgC है 2 माइक्रोलीटर, जो dNTPs हैं हर एक 1 माइक्रोलीटर इस्तेमाल हम करेंगे, और जो टैग डीएनए पॉलीमरेज उसकी कंसंट्रेशन भी 1 माइक्रोलीटर होगी, फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड दोनों 1 माइक्रोलीटर, और डीएनए टेम्पलेट दैट इज 3 माइक्रोलीटर। तो मिली की वाटर 10.5 माइक्रोलीटर, हम इसको ऐड करने के बाद 25 माइक्रोलीटर अपना मास्टर मिक्स की कंसंट्रेशन बनाएंगे। Now we will add all these ingredients in the test tube, in the Eppendorf tube, and then we transfer in the PCR tube। उसके बाद हम इसको अपने thermocycler में ट्रांसफर कर देंगे। All the necessary reagents are added to a tube which is placed in a thermal cycler. The thermal cycler can be set for the desired temperature, times, and number of cycles. Use of an automated thermal cycle is made possible by the use of DNA polymerase. This is the master mix having all our basic requirements। इसमें हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज भी मौजूद है, इसमें हमारा प्राइमर भी मौजूद है, इसमें dNTPs भी मौजूद है, इसमें हमारा बफर भी और हमारा डीएनए टेम्पलेट भी मौजूद है। All these are placed in the test tube, then we will transfer this tube to the thermal cycle. This is a thermal cycler, PCR thermal cycler that is used to amplify our desired gene। इसमें हम इसको टेम्परेचर सेट करेंगे, इसका टाइम सेट करेंगे, उसका साइकिल को सेट करेंगे, then it will work automatically after 30 cycle, और जो हम सेट करेंगे उसके बाद हमें ये हमारा डिजायर्ड नंबर और मिलियंस ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस करेगा। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जब हम ऐड कर देंगे, इट विल स्टार्ट द रिएक्शन एंड एम्पलीफाई आवर डिजायर्ड जीन। स्टेप्स ऑफ द पीसीआर, जब अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद अपने थर्मल साइकिल में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद 3 स्टेप्स होंगे जो पीसीआर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, जिससे हमारा डीएनए सेगमेंट जो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो एम्पलीफाई होगा। द प्रिंसिपल ऑफ द पीसीआर दैट इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। जो पीसीआर का प्रिंसिपल है वो टेम्परेचर वेरिएशन पे बेस करता है। इसमें हीटिंग होती है और कूलिंग होती है। हीटिंग मीन के 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग करेंगे, फिर उसको हम कूल करेंगे 50 to 54 तक, जिसमें प्राइमरी नील होगा, फिर उसको हम एक्सटेंशन के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करेंगे। थर्मल साइक्लिंग रिएक्शन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स, डिनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डिनेचुरेशन में क्या होगा, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा हाई टेम्परेचर पे। अनीलिंग में क्या होगा, लो टेम्परेचर पे 50 to 60 या 50 to 55 तक जो हमारा प्राइमर है वो बाइंड करेगा, और एक्सटेंशन में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो प्राइमर को एक्सटेंड करेगा। सो बेसिक 3 स्टेप्स हैं, डिनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। Denaturation. The double-stranded DNA becomes single-stranded at a high temperature during denaturation. Here, hydrogen bonds between two DNA strand breaks. Temperature that are required for the denaturation is 90 degree to 95 degrees centigrade. Time required for denaturation is 30 seconds to 90 seconds. At 94 degrees centigrade temperature, the double-stranded DNA opens up by breaking hydrogen bonds. The process of denaturation is followed by the initial denaturation for 5 to 7 minutes at the same temperature. हम initial denaturation temperature इसको time देते हैं, that is for 5 to 7 minutes. तो denaturation में क्या होता है, denaturation में जो double-stranded DNA है वो single-stranded DNA में convert होता है at high temperature। जो hydrogen bonds हैं वो break हो जाते हैं। Temperature कितना चाहिए होगा, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम कितना होगा, 30 to 90 सेकंड। ये हमारा जो डीएनए टेम्पलेट है, नाउ इट इज इन द डबल स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम इसको डीनेचर करेंगे 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बोथ द स्ट्रैंड्स विल सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर, की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिसोसिएट हो जाएंगी। द नेक्स्ट स्टेप इज द अनीलिंग। The primer binds or anneals to its exact complementary sequence on a DNA during the annealing step. The primer provides a site for the initiation of synthesis. एलिंगेशन के लिए प्राइमर एक साइट प्रोवाइड करेगा जिससे डीएनए पॉलीमरेज dNTPs को ऐड करेगा। टेम्परेचर फॉर एनीलिंग इज 55 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम इज 30 to 60 सेकंड। एनीलिंग फॉर मोर देन 1 मिनट causes non-specific amplification। अगर 1 मिनट से ज्यादा होगी तो नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन हो सकती है। Annealing temperature should be 5 degree lower than the melting temperature. Melting temperature of the primer is calculated using the formula melting temperature is equal to 4 into G plus C plus 2 into A plus T. This is the formula used for the
आइडेंटिफिकेशन और द मेजरमेंट ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर, और मेल्टिंग टेम्परेचर से जो एनीलिंग टेम्परेचर है वो 5 डिग्री कम होगा। फॉर एग्जांपल जो प्राइमर सीक्वेंस हमारे पास है उसमें जो नंबर ऑफ जी हैं वो 4 हैं, 5 सी है इन साइटोसिन, 7 एडेनिन है और 1 थायमिन है। इस सीक्वेंस की बेस पे हम इसका मेल्टिंग टेम्परेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर जो हमारे पास है कि वो 4 इंटू जी प्लस सी और 2 इंटू ए प्लस टी। जब 4 को जी प्लस सी जो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 इंटू ए प्लस टी, और ए और टी कितने होंगे 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, तो 36 प्लस 16 is equal to 52, तो 52 is the melting temperature, तो annealing temperature इससे 5 डिग्री कम होगा, that is 47 डिग्री सेंटीग्रेड। If the annealing temperature is too low, the primer can bind to any of the complementary sequences and gives a non-specific result। अगर annealing temperature कम होगा तो प्राइमर किसी भी सीक्वेंस से बाइंड करेगा और नॉन स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। The primer cannot bind if the annealing temperature is too high। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्राइमर बाइंड ही नहीं कर सकता। Annealing of the primer, that is 55 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। प्राइमर दोनों एंड पे आकर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस पे आकर बाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस प्राइमर को इस्तेमाल करते हुए एलोंगेशन करेगा। सो अनीलिंग स्टेप में क्या होता है, अनीलिंग स्टेप में प्राइमर बाइंड करते हैं दोनों एंड्स पे, कंप्लीमेंट्री एंड्स पे प्राइमर बाइंड करते हैं, दैट प्रोवाइड ए साइट फॉर द एलोंगेशन। Third step of the PCR reaction is the extension. In extension, Taq DNA polymerase uses the 3' end of the primer and starts DNA synthesis by adding nucleotides to the growing DNA strand. प्राइमर के साथ dNTPs को Taq DNA polymerase ऐड करेगा, इससे जो DNA का स्ट्रैंड है वो एक्सटेंड होगा, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। That's what is called the extension. The temperature required for the extension is 70 to 72 degrees centigrade. Time required for the extension is 45 seconds. Both स्टैंड हैविंग द प्राइमर, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है वो दोनों स्टैंड पे आकर बाइंड होगा और दोनों स्टैंड में जो डीएनटीपीज को ऐड करेगा। डीएनटीपीज ऐड हो रहे हैं इस स्टैंड की तरफ भी और डीएनटीपीज ऐड हो रहे हैं इस स्टैंड की तरफ। सो द बोथ स्टैंड आर डबल। नाउ जो हमारे पास एक स्टैंड था, एक जो डबल स्टैंड डीएनए था उसमें 2 डीएनए प्रोड्यूस हो चुके हैं, अब 4 स्टैंड बन चुके हैं। एक्सटेंशन ऑफ द ग्रोइंग डीएनए स्टैंड बाय टैग डीएनए पॉलीमरेज एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन में डीएनटीपीज ऐड होते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज एट द टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड। Now we have 4 strands of the DNA instead of 2 that there were with the start। जो स्टार्ट में हमारे पास 2 डीएनए के 2 टेम्पलेट थे, अब कितने हो गए, अब 2 स्टैंड है 4 टेम्पलेट हो गए। The temperature is increased back to 94 डिग्री। अब 4 स्टैंड हो गए, अब दोबारा टेम्परेचर क्या होगा, दोबारा 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होगा। The double stranded DNA molecules, each of which consist of 1 strand of the original molecule and 1 new strand of DNA denatured into single strand। अब जो ये 2 स्टैंड बने हैं, मीन जो प्रीवियस स्लाइड में जो हमारा जो फाइनल स्टेप में जो एक्सटेंशन में 2 डीएनए स्टैंड बने हैं, 2 डीएनए बने हैं डबल स्टैंड और 4 स्टैंड बने हैं, उसमें अब क्या होगा, दोबारा अब उसमें डिनेचुरेशन होगी, एनीलिंग होगी और एक्सटेंशन होगी। इस तरह इसका नंबर क्या होता है, एक्सटेंड होता रहेगा। This begins a second cycle of denaturation, annealing and synthesis, at the end of which there are 8 DNA strands। पहले साइकिल के बाद फर्स्ट साइकिल के एंड पे हमारे पास 4 डीएनए स्ट्रैंड है, अब सेकंड के एंड के बाद हमारे पास 8 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। By repeating the cycle 30 times, the double-stranded molecules that will begin with is converted into our 130 million new double-stranded molecule। 130 million new double-stranded molecule after 30 cycle we can produce। The summary of the whole PCR reaction। फर्स्ट स्टेप में जो डीनेचुरेशन के बाद डीएनए 2 स्टैंड में डिवाइड होगा, फिर अनीलिंग में प्राइमर बाइंड करेंगे और एक्सटेंशन में जो 2 कापीज ऑफ द डीएनए प्रोड्यूस होंगी। सेकंड साइकिल में जो 2 कापीज हमारे पास प्रोड्यूस हुई हैं, ये अगेन इसमें denaturation, annealing और extension होगी। Then these will produce the each produce 2 copies, तो टोटल हमारे पास नेक्स्ट साइकिल में, सेकंड साइकिल में 4 कापीज आ जाएंगी। जो थर्ड साइकिल उसमें 8 कापीज प्रोड्यूस हो जाएंगी और जो नेक्स्ट साइकिल है, जितना हम साइकिल नंबर ऑफ उसको बढ़ाते रहेंगे साइकिल को, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ कापीज ज़्यादा होंगी। अगर हम 30 साइकिल करेंगे तो 130 मिलियन कापीज ऑफ डीएनए विल प्रोड्यूस।
सो our single stranded DNA is amplified. ये सिंगल स्टैंड सॉरी ये जो सिंगल कॉपी ऑफ द डीएनए थे, सिर्फ एक ही डीएनए का जो कॉपी थी, अब इसके कितने नंबर होंगे? सिंगल कॉपी ने 30 साइकिल के बाद 130 मिलियन कॉपीज प्रोड्यूस की हैं. दैट्स व्हाई PCR is used for the amplification of the single copy of the DNA. The PCR product can be analyzed or observed in the gel electrophoresis. The amplified DNA can be seen by gel electrophoresis. Gel electrophoresis is the separation of the DNA fragments on the basis of their size and on the basis of their charge. It's a tank having two electrodes, positive electrodes and a negative electrode filled with the gel. We will load our DNA samples in these slots, and the day after the turning off the electrodes, the DNA will start to move. The shorter fragments will move towards the bottom while the larger fragments will stay at the top. जो longer fragments हैं वो top में रह जाएंगे, top पे रह जाएंगे, और जो shorter fragments हैं वो bottom की तरफ move करेंगे. Then we will visualize this gel under the autoradiography or UV lamp. सेकंड डायग्राम ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वेरी सिंपल. इसमें जो डीएनए सैंपल है, जो हमने अपने एम्पलीफाइड सैंपल है या एम्पलीफाइड जो पीसीआर प्रोडक्ट है, उसको हमने लोड किया वेल्स में. आफ्टर लोडिंग द पावर इज टर्न ऑन एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स माइग्रेट थ्रू द जेल. डीएनए फ्रेगमेंट्स जेल से माइग्रेट होना शुरू होंगे. जो शॉर्टर फ्रेगमेंट्स हैं वो बॉटम की तरफ मूव करेंगे, जो लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं वो टॉप पे रह जाएंगे. द फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय देयर साइज. ए स्मॉलर मूव टुवर्ड्स द बॉटम एंड लार्जर टुवर्ड्स द टॉप. इसके बाद हम इसको ऑटो रेडियोग्राफी में विजुलाइज करेंगे और हमारे फ्रेगमेंट्स उसको हम कंपेयर करेंगे, आइदर वी हैव एम्पलीफाइड आवर डीएनए or not. There are other types of the PCR. In the real-time PCR or quantitative PCR, the newly made DNA is tagged with the fluorescent dye so that the levels of the fluorescence can be measured after every PCR cycle. That's the real-time aspect. real-time PCR होता है, उसमें जो हमारा DNA होता है उसको हम टैग करते हैं फ्लोरेसेंस से. जो साइकिल मुकम्मल होता है वो हमें फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है. उससे हम अपने डीएनए का जो पीसीआर का साइकिल है, जो प्रोडक्ट है, उसको हम मेजर कर लेते हैं एवरी साइकिल के बाद. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रियल टाइम पीसीआर. Another PCR procedure called the reverse transcription PCR that uses viral RNA or cell's messenger RNA as the template. The enzyme reverse transcriptase makes DNA from the RNA template and the DNA is then amplified. RNA से DNA बनते हैं, फिर उस DNA को हम amplify करते हैं. That is called reverse transcriptase or reverse transcription PCR. The very important point in the PCR is that PCR can only be used to amplify relative small specific sequences of DNA as determined by the choice of primers. It cannot be used to amplify an entire genome. हम entire genome को amplify नहीं कर सकते. It can used to amplify the genome size must be or the segment size must be 1 kb to 3 kb. Some PCR हैं वो 10 kb तक, वेरी स्पेशल जो PCR हैं अप टू 40 kb तक एम्पलीफाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल 1 kb to 3 kb size can be amplified easily. Applications of PCR. PCR can be applied to any situation that requires the amplification of DNA. हर वो सिचुएशन जिसमें एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए रिक्वायर्ड होगी, वी कैन यूज द पीसीआर. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में पीसीआर इज द बेसिक टूल, बेसिक टेक्निक. Especially noteworthy are diagnostic tests that use PCR to detect the presence of infectious agents in the situation in which they would otherwise be undetectable. Sometimes जो हमारे पास infectious agent होते हैं उनको हम नॉर्मली कल्चर से या सीरोलॉजी से डिटेक्ट नहीं कर सकते. फॉर दैट पर्पस वी यूज द पीसीआर. तो इन्फेक्शियस एजेंट की डायग्नोसिस के लिए पीसीआर इज द बेसिक टेक्निक. A quantitative PCR test provides rapid identification of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis. This bacterium can make up to 6 weeks to culture, leaving patients untreated. So, identification of the Mycobacterium tuberculosis quantitative PCR is applicable. That give a rapid identification. Diagnosis of inherited diseases. The PCR is the most routinely used in the diagnosis of some inherited diseases such as sickle cell anemia, thalassemia, MTHFR gene mutation. This technique is appropriate for single gene disorder. PCR is used in the identification of genetic carriers as well. The heterozygous condition of the disease can be easily identified using PCR amplification.
DNA fingerprinting and genetic imprinting. The PCR is the first choice for DNA fingerprinting, criminal verification, identification of a person, and material cell contamination can be detected using DNA fingerprinting. PCR is one of the best techniques for marker assisted selection. Reflip, restriction fragment length amplified fragment polymorphism, rapid, that is the random amplified polymorphic DNA, variable number of tandem repeats and short tandem repeats are some of the PCR based techniques. इसमें हम इन सारे जो मार्कर्स इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए एनालिसिस में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे. सो पीसीआर इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स. पीसीआर is applicable in the parental diagnosis of inherited diseases. The expression of a particular gene can be measured using reverse ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर. किसी जीन की एक्सप्रेशन को मेजर करने के लिए भी हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं. PCR is applicable to sex determination and sex identification. PCR amplification is one of the important steps in DNA sequencing and microarray. PCR is also useful in validation of personalized medicines. PCR has two limitations. In order for the primers to anneal to correct positions either side of the gene of interest, the sequence of these annealing sites must be known. प्राइमर को correct binding करने के लिए जो annealing sites से उनका known होना, उनकी identification होना बहुत जरूरी है. It is easy to synthesize a primer with a predetermined sequence, but if the sequences of the annealing sites are unknown, then the appropriate primers cannot be made. तो प्राइमर हमेशा प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस को हम सिंथेसाइज करते हैं. अगर सीक्वेंस मालूम नहीं है देन प्राइमर सिंथेसिस इज इम्पॉसिबल. दिस मींस दैट पीसीआर कैन नॉट बी यूज्ड टू आइसोलेट जीन दैट हैव नॉट बीन स्टडीड बिफोर, दैट हैज टू बी डन बाय क्लोनिंग. तो वो जीन जिनको पहले आइसोलेट नहीं किया, जिनके बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं, उसको हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते. तो उनको एम्पलीफिकेशन के लिए हम मेनली क्लोनिंग का इस्तेमाल करेंगे. पीसीआर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लार्जर फ्रेगमेंट्स. तो हम लार्जर फ्रेगमेंट्स के लिए हम पीसीआर इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्लोनिंग पीसीआर प्रोडक्ट, हमने जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डिजायर जीन उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको हमने एम्पलीफाई कर लिया. अब इसको हम क्लोन कैसे करेंगे, उसको हम अपने वेक्टर में कैसे इंसर्ट करेंगे, उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे. देयर आर टू अप्रोचेस that should be used for the cloning of PCR product. Number one, the Taq polymerase tend to add an additional nucleotide, usually an adenosine, to the end of each strand that is synthesized. जब भी DNA का कोई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, एम्पलीफाई होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज के पास ये एबिलिटी है कि उसके साथ वो एक एडिशनल न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है जिसको हम एडिनोसिन बोलते हैं. तो एडिनोसिन जब हमारे एम्पलीफाइड सेगमेंट के साथ ऐड होगा, इट मींस हमारा जो डिजायर्ड सीक्वेंस है उसमें एडिनोसिन ऐड हो गया, उसमें एक सेगमेंट इंक्रीज हो गया. दिस मींस दैट डबल स्टैंडर्ड पीसीआर प्रोडक्ट इज नॉट ब्लंट एंडेड. जो पीसीआर प्रोडक्ट है वो ब्लंट एंड नहीं है, वो फ्लैश एंड नहीं है. एंड instead most three prime termini have a single nucleotide overhang, that is adenosine. तो हर जो पीसीआर प्रोडक्ट है उसमें 3 प्राइम एंड पे एक न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग होता है, एक्सटेंशन होती है उसकी जो एडेनोसिन टैग डीएनए पॉलीमरेज ने ऐड किया. The overhang could be removed by treatment with an exonuclease enzyme, resulting in PCR product with the true blunt ends. But this is not a popular approach as it is difficult to prevent the exonuclease from becoming overactive and causing further damage to the ends of the molecules. जो overhang end है उसको हम exonuclease enzyme से हम remove कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए हम इसको ये मुश्किल होगा हमारे लिए क्योंकि जो एक्सोन्यूक्लियस है उसको हम अपना जो नॉर्मल डीएनए है, जो नॉर्मल एम्पलीफाइड पोर्शन है डीएनए का, उसको कट करने से हम नहीं रोक सकते, इसलिए ये हमारे डीएनए को भी डैमेज करेगा. तो हम क्या करेंगे, हम एडिनोसिन को कट नहीं करेंगे, तो हम अपने जो वेक्टर है उसमें मॉडिफिकेशन लाएंगे. One solution is to use a special cloning vector which carries thymidine overhang and which can therefore be ligated to a PCR product. जो हमारा वेक्टर होगा उसमें हम एक जो न्यूक्लियोटाइड है बेस से थाइमिडीन को ऐड करेंगे. चूंकि एडिनिन का जो कम्प्लीमेंट्री है वो थाइमिडीन है, तो हम थाइमिडीन को ओवरहैंग कर देंगे अपने वेक्टर के साथ. अब इसको हम कैसे करेंगे, अपना जो वेक्टर है उसके साथ हम उसको टैग डीएनए पॉलीमरेज के साथ हम मिक्स करेंगे. लेकिन अब यहाँ पे हम प्राइमर ऐड नहीं करेंगे. जब प्राइमर ऐड नहीं करेंगे तो थाइमिडीन ऐड करेंगे. जब थाइमिडीन उसको एक एंड पे ऐड कर लेगा, इसलिए हमारे पास जो
प्राइमर के पास थाइमिडीन आ जाएगा और जो वेक्टर के पास थाइमिडीन होगा और जो हमारा पीसीआर के पास एडीन होगा। ये कंप्लीमेंट्री होगा, आपस में बाइंड कर जाएंगे। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग इज कॉल्ड टीए क्लोनिंग। ये जो हमारा एम्पलीफाइड सेगमेंट है, polynucleotide synthesized by DNA polymerase often have extra adenosine 3 प्राइम एंड पे एक्स्ट्रा एडेनोसिन मौजूद है, इसके भी और दूसरे स्टैंड के भी। दोनों स्टैंड के 3 प्राइम एंड पे एक्स्ट्रा एडेनोसिन मौजूद है। अब हम इस एक्स्ट्रा एडेनोसिन को अगर रिमूव करते हैं फ्लश एंड बनाने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा जो नॉर्मल डीएनए है उसको भी कट करे, उसको डैमेज करे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो वेक्टर है उसके साथ थाइमिडीन अटैच कर देते हैं। अब थाइमिडीन कैसे अटैच करेंगे, इस वेक्टर को हम ट्रीट करेंगे टैग पॉलीमरेज के साथ, उसके साथ हम ऐड करेंगे थाइमिडीन। तो अब थाइमिडीन ऐड करने के बाद चूंकि यहाँ पे प्राइमर मौजूद नहीं है, तो हमारा जो टैग पॉलीमरेज है वो थाइमिडीन को अटैच कर देगा दोनों एंड पे वेक्टर के। और जब थाइमिडीन अटैच होगा, दोनों एंड पे जब अटैच होगा, इट मींस जो पीसीआर है उसके पास ए मौजूद है, तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं। जब कंप्लीमेंट्री तो आपस में बाइंड कर लाइगेट करने के बाद हमारा जो डिजायर जीन है वो इंसर्ट होगा हमारे वेक्टर में। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग इज कॉल्ड टीए क्लोनिंग। A second solution is to design primers that contain restriction sites. जो सेकंड सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन तो ये है कि वेक्टर के साथ थाइमिडीन अटैच कर दें, क्योंकि एम्पलीफाइड प्रोडक्ट के पास क्या है, एडेनिन है, वो बाइंड कर जाएंगे कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ। जो सेकंड सोल्यूशन ये है कि जो प्राइमर है उसके साथ हम रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऐड कर दें। सेकंड सोल्यूशन इज टू डिजाइन प्राइमर्स दैट कंटेन रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ऐसा प्राइमर डिजाइन करें जिसमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद हो। आफ्टर पीसीआर द प्रोडक्ट्स आर ट्रीटेड विद द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच कट्स ईच मॉलिक्यूल विद इन द प्राइमर सीक्वेंस, leaving sticky ends fragments that can be ligate efficiently into a standard cloning vector। तो उसको हम प्रोडक्ट के बाद हम उसको रिस्ट्रिक्शन के साथ कट करें और फिर वो हमारे स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो और जो हम इजीली हम अपने वेक्टर में उसको लाइगेट कर सकें। प्राइमर सीक्वेंस हैविंग द रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर द BAM-H1। ये जो रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट था, इसमें जो ये सीक्वेंस स्पेसिफिक जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, दिस इज फॉर द BAM-H1। तो एक्स्ट्रा एज यहाँ पे भी ऐड है। तो हमने जब BAM-H1 ट्रीट किया तो ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ऑब्टेनिंग ए पीसीआर प्रोडक्ट विद स्टिकी एंड थ्रू ए यूज ऑफ द प्राइमर हुज सीक्वेंस इंक्लूड ए रिस्ट्रिक्शन साइट्स। तो प्राइमर के सीक्वेंस में हम रिस्ट्रिक्शन साइट इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ दिस स्टिकी एंड कैन इजीली बी जॉइन विद अवर वेक्टर हैविंग द स्टिकी एंड्स। दूसरा तरीका यह है कि हम रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो ओवरहैंग एंड है उधर उसमें प्रोड्यूस करें। ठीक है, पीसीआर प्राइमर विद रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट विद इन एन एक्सटेंशन एट द 5 प्राइम एंड। उस रीजन में जो 5 प्राइम एंड में एक्सटेंशन है उसमें हम अपना जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स इंट्रोड्यूस करें। इससे ये होगा कि जो हमारा इंटरनल सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक टीए क्लोनिंग की, दूसरा रिस्ट्रिक्शन साइट इंसर्शन की। दोनों में से कोई एक टेक्निक भी अप्लाई हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी। दैट्स ऑल अबाउट द पीसीआर रिएक्शन। PCR polymerase chain reaction involve in different steps: denaturation, annealing, and extension by using different basic requirements: DNA template, primer, dNTPs, and Taq polymerase. We can use the PCR in molecular biology, genetic engineering, and biotechnology. And PCR product can be cloned by using two different techniques, by TA cloning or by inserting restriction sites in the primer. Thank you so much. In the next lecture we will discuss about the ligation.